Let's now come to the problems related to depreciation. Question number 2, very first we'll be talking about. Messrs XYZ acquired a machine on 1st of July 2016 at a cost of rupees 20,000 and spent 5% of cost as installation. XYZ Limited writes off depreciation at 10% of the written down value at the end of every year. The books are closed every year on 30th June. Show the machinery account and depreciation account for 3 years. Do I need to solve this kind of question? To machinery account debit side, to bank rupees 20,000, then to bank rupees 1,000. Page number 28. Then by depreciation rupees, what is that? 2,100 by balance carried down. How much? 21,000 minus 2,100. 18,900. Then two balance brought down 18,900 by depreciation 1890. By balance carried down 17010. Debit side, two balance brought down 17010 by depreciation 1700 or 1701 by depreciation. Sorry, by balance brought down 15309. That's it. हो गया. ये कौन सी बुक है? अरे यही बुक तो तुम्हारे से शेयर की है ना मैंने. क्वेश्चन बुकलेट. हाँ. अच्छा ये अलग है. हद हो गई यार. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. Let me check. Hello, check, cross check. Just one moment. Let's come on to question number 2. That was a different booklet. Forget about that now. A machine is purchased for rupees 5 lakh. Expenses incurred on its cartage as rupees 1 lakh. Calculate the amount of depreciation at 10% per annum according to the straight line method and written down value method for the first year ending 31st March 2002. If this machine is purchased on 1st April 2001, 1st July 2001, 1st October 2001 or 1st January 2002. That is for full year, 9 months, 6 months and 3 months. Correct? In either of the method, whether you are following straight line or reducing balance method, your amount of depreciation will be 6 lakh into 10%, 60,000, 45,000, 30,000 and 15,000. Is it right? Yes or no? Because the rate of depreciation has already been provided to you. It is 10% par. Yes. The next one, when the rate of depreciation is not given to you. A machine is purchased for rupees 80,000. Expenses incurred on its cartage and installation is 20,000. एक पेटी की machine total. The residual value at the end of its expected useful life is of 4 years is estimated to be rupees 40,000. Calculate the amount of depreciation according to the straight line and the written down value method for the first year ending on 31st March 2002. If this machine is purchased on 1st April, 1st July, 1st October, if it is straight line method, then in that case 60,000 divided by 4, that comes to 15,000 for the full year, divide by 12 into 9. Straight line method की बात कर रहा हूं पहले मैं. Rate of depreciation under the reducing balance method will come. Under the straight line method, the amount of depreciation will be 15,000, 11,250, 7,500 and 3,750. Whereas under the reducing balance method, you will first be required to calculate the rate of depreciation. What will be the rate of depreciation? Scrap value, that is 40,000, divide by cost, that is 1 lakh, equal to, दो बार रूटेंगे, रूट
minus 1 into 100. So rate of depreciation comes to 20.47%. Yes or no? Just put up the screen. आजा भाई, इधर से तो चला गया, उधर क्यों नहीं आया? चल भाई, हाँ आ गया। देखो चमाट मारने पे बढ़िया काम होते हैं हमारे यहाँ। Question number 3 is what we are talking about on page 8.1. Under the reducing balance method, we are supposed to calculate the rate. The rate will be equal to 1 minus 4th root of 40,000 up on ek peti whole multiplied by 100. And this comes to 20.47%. Is that right? So accordingly, if the machine is purchased on 1st April 2001, the amount of depreciation will be ek peti into 20.47% directly, that is 20,470. If it is purchased on 1st of July 2001, then the amount of depreciation will be ek peti into 20.47% into 9 upon 12. 2470 divided by 12 into 9, that comes to 15,353 approximately. If it is purchased on 1st of October 2001, in that case, the amount of depreciation will be what? Into 6 upon 12, that comes to 10,235. And if it is purchased on 1st of January 2002, then the amount of depreciation will be 1 lakh into 20.47% into 3 by 12, and that comes to 5118. Is it right? Shall I go ahead? हाँ सर, कहाँ आप कौन से सवाल लेते थे? ये कहाँ से आ गए सवाल? इनको कोई सवाल बोलता है? ये बेस है एक्चुअली। ये सवाल अगर ठीक से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा बेस पक्का हो जाएगा, एंड व्हेन योर बेस विल बी पक्का, you will be strong for solving your questions. Okay. X Limited purchased a second-hand machine of rupees 5 lakh and spent 1 lakh on its repairs. Now, this 1 lakh which is spent on its repair is basically the expense to make the asset ready to use. And therefore, that will be considered as a capital expenditure and will be added to the cost of asset or not. Depreciation is to provided at 10% per annum. This machine is sold for rupees 4,50,000. Accounting year is financial year. Calculate the profit or loss on sale of machine in each of the following cases if X Limited follows SLM and WDV. Overhauling, repair, servicing is nothing but a repair and maintenance expense. Overhauling cannot be treated as a capital expenditure. That will be treated as a revenue expenditure. Kshitija. The date of purchase is 1st April 2001 and the date of sale is 31st of March. Now, first of all, we'll go through the SLM. Question number 4 on page number 8.1. Under SLM, case A. Book value on 31st March 2004 will be equal to what? छह पेटी minus 60,000
into. Why 60,000 into? Because 60,000 is the depreciation per annum. 2001 में परचेज किया, सो 1 2 2 3 3 4 3 साल का आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. So the book value comes to 4 lakh 4,20,000. Correct. And the sale value is 4,50,000. So profit on sale will be equal to 4,50,000 less sale value, book value, that is 4,20,000. That comes to rupees 30,000. Is it right? Case B, if it is sold 3 months prior, then again we'll be required to calculate book value on 6 months prior, in fact. That is equal to 6 lakh minus 60,000 into 2.5 years. Why 2.5 years? 1 2 full year, 2 3 full year, and 3 4 half year. So accordingly that comes to 2.5 years. And accordingly the book value comes to 4,50,000. So no profit, no loss. Because the sale value is equal to book value, as sale value is equal to book value of the asset. Did you get this? Next one, if the date of purchase is 1st of July 2001 and sale is on 31st March. पार्थ एग्जाम में अगर ऐसे सवाल डालूंगा ना, तुम लोग ना मतलब बहुत हवा में उड़ जाओगे. ऐसे सवाल टेस्ट में बिल्कुल नहीं आएंगे. ये सलाह नहीं, चेतावनी है. Book value on 31st of March 2004. अब 1st July of 2001 की बात कर रहे हैं हम लोग, right? That means 2001 to it is used only for 9 months. 2002-3 it is for full 1 year, and 2003-4 it's for full 1 year. So 2 years and 9 months. Accordingly, it will be what? 6 lakh minus 60,000 into 2.75 years. Are you getting this? फाउंडेशन में भी और क्लासेस की टेस्ट में भी. ओमकार, 60,000 into 2.75, that is 1,65,000 minus 6 lakh. So 4,35,000 is the book value. And therefore, profit on sale will be equal to what? 4,50,000 minus 4,35,000. That is equal to 15,000. Am I right? And the last case is what? If the date of purchase is 1st July 2001 and sale is 30th September 2003, means 2.25 years. Case D. Book value on 31st March 2000 and 31st March, 30th September 2003. 30th September 2003. Yes, that's why I'm presenting the whole answer in front of you, Harsh. मैं क्या इधर भूगू करने के लिए बैठा हूं? टाइम पास कर रहा हूं मैं. ये 6 lakh पूरा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, because the question is very straightforward. Calculate the profit or loss. मतलब ये वर्किंग नोट्स है तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर फुल प्रॉब्लम आता है तो दीज आर द काइंड ऑफ वर्किंग नोट्स दैट यू आर सपोज्ड टू प्रेजेंट इन दैट, जब डिस्पोजल मेथड नहीं होती है तब. माइनस 60,000 into 2.25. Why 2.25? 2001-2 के 9 months, 2002-3 का full year, and 2003-4 का only 6 months, 30th September 2003 तक. That's why it is 2.25 years.
And accordingly, the book value comes to what? 60,000 into 2.25, that is 1,35,000 minus 6 lakh, that comes to 4,65,000. Now the book value is more than sale value or not? And as the book value is more than sale value, so there is a loss on sale of asset. Jay, absolutely. Working notes do form part of your answers and do carry the marks as well. So you are supposed to draw the working notes either separately or show within the answer itself. Loss on sale. तुम लोग जिस तरह के सवाल पूछो, मुझे लगता है कि मैंने ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किए तो भी चलेगा तुम लोग को। सर ये क्या पांचट सवाल आप हमारे सामने सॉल्व कर रहे हो? आप थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो ना। $4,65,000 less 4,50,000. So loss on sale of asset comes to 15,000. Is it right? Now these all were the situations when you are following the straight line method. However, had you followed the reducing balance method, in that case, if you are solving case A, now you cannot charge the depreciation on the cost. You have to charge the depreciation on the book value. So accordingly, book value on 31st March, first case की बात कर रहे हैं हम लोग, of 2004 will be equal to 6 पेटी। 2001-2 के लिए फुल ईयर का डिप्रिसिएशन 10%, 2002-3 के लिए फुल ईयर का डिप्रिसिएशन 10%, पर 2003-4 के लिए भी फुल ईयर का डिप्रिसिएशन दैट इज 10%. So accordingly that comes to what? 6 lakh minus 10%, 1 minus 10%, 2 minus 10%, 3. So that comes to 4,37,400. यहाँ आप डायरेक्टली आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख के भी आंसर कर सकते हो, but I would suggest this presentation will work because it clearly indicates that you have understood that how many years you have been charging the depreciation और तुम्हारा मिस्टेक करने के चांस कम हो जाते हैं. So accordingly, profit on sale will be equal to 4,50,000 being the sale value less 4,37,400 being the book value, and that comes to how much? Rupees 12,600 being the profit on sale. Are you able to understand this? अरे मैं ये टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है या नहीं? मैंने अनाउंस क्या किया कि मेरे अब लेक्चर्स बंद होने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, इमीडिएटली पॉपुलेशन ही गायब हो गया है। कहां 380 लोग हुआ करते थे, 390 लोग हुआ करते थे, अचानक 280 290 लोगों पे आ गए हैं। फॉर्मूला से कैसे करेंगे भाई साहब? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी द फ्यूचर वैल्यू, after reducing it at by 10%, you can get the future value or not? ऐड नहीं करना है, सबट्रैक्ट करना है, उतना याद रखना सिर्फ। जय यू कैन लीव अगर वो टाइम पास लग रहा है तेरे को तो। यही अगर मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिए होते ना तुम लोगों को, अचानक से सवाल पूछना चालू कर देते लोग कि सर ये 12,600 कैसे आया, सर वो 30,000 का प्रॉफिट कैसे आया, सर वो 15,000 का लॉस कैसे आया। मतलब मैं जब सॉल्व करके दे रहा हूं तो लोगों को टाइम पास लग रहा है, एंड व्हेन आई एम नॉट सॉल्विंग एट दैट टाइम पीपल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। Harsh, your answer is wrong because the last year it is 6 months and not for the full year. Book value on 30th September 2003 will be equal to 6 lakh
less 10% for the first year. For the next year, it is less 10% again. But for the third year, that is 2003-4, for 2003-4, you are not going to subtract the depreciation for full year, but you are going to subtract it only for half year. Half year means 5% or not. So less 5%. क्योंकि full year का depreciation का 10%, तो half year का it will be 5%. That comes to 6 lakh less 10% 1, less 10% 2, less 5% 3. That is 4,61,700. And so in this case, there is a loss on sale. जब हम SLM follow कर रहे थे, तो there was no profit, no loss in case B. But here there is a loss of 4,61,700, less sale value of 4,50,000. So loss on sale of asset is 11,700. Did you get that? Then the case C. Now this is interesting because you have not purchased the asset at the beginning. You have purchased the asset during the year. कल जब मैं revision का discussion कर रहा था, उस समय पे मैंने आपको कहा था that in the year of purchase and the year of sale, if the date of purchase is after the year begin, or if the date of sale is before the year end, then proportionate depreciation need to be calculated. So accordingly, book value on 31st of March 2004 will be equal to 7.5%. ये last में नहीं आएगा, 7.5% ये first में आएगा. Will be equal to what? 6 lakh minus 7.5%. क्यों 7.5%? Full year का depreciation का 10%, तो 9 months के लिए it will be 7.5% or not? So for 2001-2 it is 7.5%, less 10% for 2002-3, and less 10% for 2003-4. Accordingly, the book value comes to 6 lakh minus 7.5% minus 10% minus 10%. That is 4,49,550. And as the book value, can we charge proportionate depreciation in sum of digits method? No, Khushi. Under the sum of digits method, there is no question of charging the depreciation on the proportionate basis. Why? Why? Because when you are calculating the depreciation on a mathematical formula, you cannot apply the proportions in that. पता नहीं कैसे पर उल्टा किया तो भी सेम आता है. अरे भाई साहब हर्ष, यहाँ पे सेम आने के पीछे रीजन ये है कि तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो और योर परसेंटेज एंड द ओरिजिनल वैल्यूज आर सेम. यहीं अगर एक मशीन और ऐड हो जाती तो तुम्हारा आंसर अचानक से बदल जाता. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर. So there is a profit on sale of rupees 450. And the last case, book value on 30th September 2004 will be equal to what? First year के लिए your depreciation will be 7.5%. Second year के लिए your depreciation will be full 10%. But third year के लिए your depreciation will be only 5%. Why? Because 30th September is half of the year. 6 lakh minus 7.5% minus 10% minus 5%. That comes to 474,525. 74,525. And accordingly, there is a loss on sale of asset that is equal to 24,525. Is it right?
अरे 2003 मतलब 30 सितंबर 2003 है प्रथम. अथर्व, in the first year, if you have purchased the asset on 1st of July 2001, then how can you charge the depreciation for the full year? अगर 1st जुलाई 2001 को आपने asset purchase किया है तो 2001-2 का जो depreciation है that will be only for a period of 9 months or not. अगर 10% पूरे साल के लिए तो 7.5% will be for the partial year or not. Yes, Neha, for case B, it is 30th September 2003. It's absolutely correct. 30th September 2003 comes in the financial year 2003-4 or not? Neha, financial year 2003-4 starts from 1st of April 2003 and ends on 31st March 2004. Yes or no? अगर ऐसे डेट्स पे फोकस नहीं करोगे तो बेटा लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, याद रखो. पहले लॉकडाउन में घर में बैठे हैं सर, डेट्स के बारे में तो आप बात मत करो प्लीज. और उसमें आप हमको डेट में कंफ्यूजिया रहे हो तो कैसा होएगा हमारा आगे चल के पता नहीं. नेहा, नीड टू फोकस ऑन द डेट बेटा. If you do not focus on the date, you will be having a long wait. Isn't it? बरोबर बोला है नहीं? रंजीत, उसके पीछे का लॉजिक बहुत अलग तरह से बताऊंगा मैं. आजा फिर तू. नेहा, तू किधर रहती है? You take out the time and come to the office, we'll meet. दुबई के नहीं, अमान के डेट्स बहुत अच्छे होते हैं. मंडे को मिलेंगे, अपन चाय पियेंगे साथ में. ठीक है नेहा? हाँ, सीए के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के ही डेट्स होते हैं. मैसेज कर, मैं बताऊंगा तेरे को टाइम. ओके, लेट्स कम बैक. Fifth question. From the following information of X Limited, prepare the machinery account for 3 years ending 31st March 2004. Method of depreciation. In one case, it is straight line. In another case, it is WDV. Rate of depreciation is 20% per annum. On 1st April 2001, purchased a second-hand machine for rupees 80,000. On 1st April 2001, spent 20,000 for its repairs to make it serviceable. Means it is an expense to make the asset ready to use. On 1st October 2001, purchased a new machine for rupees 2 lakh. On 1st April 2002, spent 2,000 on repairs of the new machinery. Now, this repairs on the new machine is nothing but a kind of revenue expense. And therefore, we are not worried about this particular expense at all. जो हमने 1st April 2002 को दिया है वो तो तुमको मालूम बनाने के लिए दिया हुआ है. Then on 30th September 2003, sold a machinery for rupees 45,000. And on 30th September 2003, purchased a new machine for rupees 3 lakh. In fact, the similar kind of question we had done already, if you remember. Now you do one thing, you fatafat do the calculations and tell me what will be the closing balance in the machinery account on 31st March 2004. Do the calculations fast and tell me what will be the closing balance on 31st March 2004. Machinery account आप खुद से बना लेना. You just tell me the closing balance. In both the methods, straight line as well as reducing balance method. Question number 5, 8.2. रंजीत, कहाँ फोकस है तुम लोगों का? तो अपने लिए डेट ढूंढ रहा है क्या यहाँ पे?
गौरव तू महाराष्ट्र में रहता है ना रे, तेरे को गुजरात के लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं इस पर से, क्योंकि दुनिया में जब लॉकडाउन ओपन हो रहा था तब महाराष्ट्र लॉकडाउन में था। हाइच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट आर्य। 2001 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, 2003 4। केतन तुम दोनों के आंसर गलत है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से दिया तूने आंसर ये। केतन, यश, गलत है, तुम दोनों के आंसर गलत है। गलत गलत, सुदर्शन कहां से लेके आया 589? क्लोजिंग बैलेंस पूछा है मैंने, हाँ। गलत है जय तेरा आंसर। इसीलिए अभी जो सॉल्व करवाया था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हिमांशु आदित्य गलत है। क्षितिजा यू आर करेक्ट। दोनों मेथड से करना है जय, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस से नहीं। यश एब्सोल्युटली रॉन्ग, इतना ऑड नंबर आता ही नहीं है। हर्ष गलत है तेरा भी आंसर, डब्ल्यूडीवी से भी। वेदांग रॉन्ग है। राज, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस पूछा है मैंने। 30 सितंबर 2003 को नया मशीन खरीदा है हमने, अगर याद होगा तो। नजर हटी, दुर्घटना घटी। गलत है, गलत है। साहिल गलत है आंसर। इतना बेसिक सवाल पूछा है तुम लोगों को, उसमें भी तुम इतना माती खा रहे हैं। सिद्धि यू आर करेक्ट। एनोनिमस ओम, तुम दोनों के आंसर गलत है। नहीं केतन, प्रणव यू आर बोथ आंसर्स आर करेक्ट। प्रणव आम्बेकर बी डिवीजन। सृष्टि योर आंसर इज रॉन्ग एज पर एसएलएम। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
तुम लोग जो दे रहे हो वो आंसर नहीं हो सकता। जय, ये भी नहीं हो सकता। और बोल, टाइम पास करवा रहे हो। राज, एसएलएम का आंसर नहीं है ये बेटा। SLM means straight line method. Straight. Think straight. That's more important in the current life. Even though the laws in our country have changed. वैष्णवी, रॉन्ग आंसर है। ये आर्य, तू क्या हूं कर रहा है? तेरे लिए अलग लॉ अप्लाई होता है क्या? श्रीपाद, तू बहुत दूर है बेटा सही उत्तर से। तेरा उत्तर तुझे दक्षिण की तरफ लेके जाएगा। अनुष्का, रॉन्ग आंसर। सुमित, नहीं है। उदय सर, योर आंसर इज करेक्ट एज पर एसएलएम। इतना पांचट सवाल, इसको तुम इतना समय लगाओगे तो कैसा होएगा रे? रेशम, रॉन्ग। नहीं मेहक, यश, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। क्षितिजा, ये अमाउंट किस चीज की है बेटा? यस, करेक्ट आंसर क्षितिजा। तन्वी, तेरा आंसर गलत है। सिद्धांत, रॉन्ग। सानिका, नहीं है करेक्ट आंसर। चलो मैं अब आंसर देता हूं, तुम जुगाड़ करो। एज पर एसएलएम द क्लोजिंग बुक वैल्यू इज 3,70,000। और इसका जब मैं शॉर्टकट बताऊंगा ना, तुम लोग सच में रोगे अभी घर पे बैठ के। एंड एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड द आंसर इज 3,85,200। मिलाओ जुगाड़, मिलाओ, चलो। अभी गॉट इट करके क्या फायदा है मन? If machinery is purchased for 1 lakh and charges to make it ready to use is 1,000 in the next month, please understand and remember this as a point. Depreciation starts from the point the asset is ready to use. Write down, this is a point to remember. Depreciation won't start from 1st April. Yes, depreciation will start from the point the asset is ready to use. Likho, depreciation on an asset is calculated. Depreciation on an asset is calculated from the date the asset is ready to use. तो जब तक asset इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक तुम उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। कर लग रहे बात? यश, हाँ, अब मैं इसका शॉर्टकट बोलूं, मैंने ये कहां से कैलकुलेट किया? 3,70,000, 3,85,200। अब जो असेट मैंने बेच दी है, जिसके पीछे तुम घुसे हुए थे, जिसके पीछे तुम कैलकुलेशन कर रहे थे, वो असेट तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस में है ही नहीं। तो आई कंप्लीटली इग्नोर दैट असेट, asset one which we have sold already. Honesty is the only policy. I repeat, honesty is the only policy. How many of you were doing the calculation with reference to asset one as well? Please raise your hands. Honesty is the only policy. You are not supposed to lower your hands, you just raise your hands. पूरी क्लास के मोर देन 40% पीपल, 50% पे आ गया ले, 50% लोग माती खा के बैठे और मैं इधर टाइम पास करवा रहा हूं।
है ना? 50% of the population went behind that asset which is sold. जो अगर asset बिक गई है तो how will it be included in the closing balance? You are going to consider only the assets which are existing as on 31st March 2004 or not. And if you are supposed to consider only the assets which are existing as on 31st March 2004, that means you have to ignore machine 1. तो अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो तो मशीन 1 का जो बैलेंस आता है दैट विल बी 2 लाख minus 40,000. Why 40,000? 2 lakh का 20%, that is 40,000 into 2.5 years, that is 1 lakh is the book value. और M3 M1 ने M2 और M3 जो है वो 3 लाख में खरीदी आपने 30 सितंबर को, तो इसमें तो सिर्फ एक ही साल का डिप्रिसिएशन आएगा, दैट इज 10%, 6 महीने का, इनफैक्ट एक साल का भी नहीं, एंड दैट कम्स टू 2,70,000. And accordingly the total value of that comes to rupees 3,70,000. खत्म. इतना स्ट्रेट सिंपल क्लियर आंसर था. Whereas if you are following reducing balance method, M2 के केस में what you are going to do, 2 lakh being the cost of that asset less first year का depreciation 10%. Why 10%? Because asset is purchased on 1st of October, मतलब 6 महीने का depreciation, less 20% for the year 2003-4, I'm sorry 2-3, and again less 20% for the year 2003-4. So accordingly that comes to 1,15,200. और M3 के केस में तो कैलकुलेशन रिमेन सेम, that is 3 lakh, क्योंकि first year of depreciation and rate of depreciation in both the methods is given as same, 10%, that is 3,70,000. And accordingly the total of these book values come to, ज्यादा हो रहा है, total of these book values come to 3,85,200. It's as simple as that. और हम लोग टाइम पास करने में बिजी थे, वो जो मशीन बेच दी उसका कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ. जब क्लोजिंग बैलेंस में तुम्हारा ना असेट का वैल्यू इंक्लूड होता है, ना प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ना लॉस कैलकुलेट होता है, व्हाई वर यू बिहाइंड दैट? थोड़ा सा लॉजिकल सोचना चालू करो, अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा. हाँ 2,70,000, आई एम सॉरी हर्ष, दैट इज टाइपो एरर, अल्टीमेट इफेक्ट वही दिया मैंने. तो तूने 27 लाख टाइप किया है, मैं तो 2,70,000 से 270 का 370 ही किया. मैंने 1 लाख का फर्क किया है, तूने तो कितना कहां से कहां फर्क लेके चला गया. मशीनरी अकाउंट तुम बना लो बेटा पार्थ, and you send the WhatsApp to me now. Parth, you will prepare the machinery account and send the WhatsApp to me so that I'll be checking it and send it on the group then. Yes, M3 is used only for 6 months. That's why we have charged partial depreciation, that is of 10% or not, 20% की जगह. Sakshi, annual depreciation का 20% है तो 6 months का 10% आएगा या नहीं? Yes or no, Sakshi? Did you people understand this? I considered 10 by mistake. La. चलो लो होमवर्क लो. Question number 9. Question number 10. Question number 13. Question number 14. Question number 15. बस ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा आज मैं. 9, 10, 13, 14, 15 लिख के रखता हूं मैं. तुम लोग ना मेरे को भुला दोगे बाद में. होमवर्क क्या डेट है आज की? 20/11/2020. 9, 10, 13, 14 and 15. That's it. Only 5 questions as homework. In that case, Rohan, even the revaluation reserve will be transferred to the asset disposal account.
बिल्कुल भी यूज नहीं है क्षितिजा, एब्सोल्यूट टाइम पास मेथड। इज इट राइट? चलो, विल मीट टुमारो, थैंक यू।